दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes. Country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes. Country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan,
Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Ritik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to
कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानी ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन. प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया. रिलीज डेट 23 जून 2006. रनिंग टाइम 175 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 40 करोड़. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन. द फिल्म स्टार ऋतिक रोशन इन ए डुअल रोल अलोंगसाइड प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना एंड मनानी मिश्रा. इट इज़ द सेकंड इंस्टॉलमेंट इन द क्रिस फ्रेंचाइज एंड ए सीक्वल टू कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानी ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन. प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया. रिलीज डेट 23 जून 2006. रनिंग टाइम 175 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 40 करोड़. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन. द फिल्म स्टार ऋतिक रोशन इन ए डुअल रोल अलोंगसाइड प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना एंड मनानी मिश्रा. इट इज़ द सेकंड इंस्टॉलमेंट इन द क्रिस फ्रेंचाइज एंड ए सीक्वल टू कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानी ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन.
Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced
to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट, स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा, सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल, एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान, सॉन्ग्स राजेश रोशन, प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया, रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saraj Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट, स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा, सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल, एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान, सॉन्ग्स राजेश रोशन, प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया, रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saraj Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट, स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा, सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल, एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान, सॉन्ग्स राजेश रोशन, प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया, रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन
superhero action thriller film directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana,
Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saras Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to
कोई मिल गया in the film Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starring Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starring Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan.
Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced
to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट, स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा, सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल, एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान, सॉन्ग्स राजेश रोशन, प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया, रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन। द फिल्म स्टार ऋतिक रोशन इन ए डुअल रोल अलोंगसाइड प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना एंड मनानी मिश्रा. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट, स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा, सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल, एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान, सॉन्ग्स राजेश रोशन, प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया, रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन. द फिल्म स्टार ऋतिक रोशन इन ए डुअल रोल अलोंगसाइड प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना एंड मनानी मिश्रा. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट, स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन, स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा, सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल, एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला, म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान, सॉन्ग्स राजेश रोशन, प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया, रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन
superhero action thriller film directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana,
Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to
कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन. प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया. रिलीज डेट 23 जून 2006. रनिंग टाइम 175 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 40 करोड़. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन. प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया. रिलीज डेट 23 जून 2006. रनिंग टाइम 175 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 40 करोड़. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानि ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन.
Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced
to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन
superhero action thriller film directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil. Edited by Amitabh Shukla. Music by Salim Suleiman. Songs Rajesh Roshan. Production companies Filmcraft Production Private Limited. Distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006. Running time 175 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 40 crores. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana,
Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt, story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra, cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan, production companies Filmcraft Production Private Limited, distributed Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, budget 40 crores, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to
कोई मिल गया. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानी ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन. प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया. रिलीज डेट 23 जून 2006. रनिंग टाइम 175 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 40 करोड़. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saraj Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानी ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन. प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड. डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया. रिलीज डेट 23 जून 2006. रनिंग टाइम 175 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 40 करोड़. बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Saraj Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय सचिन भौमिक, राकेश रोशन, आकर्ष खुराना, हानी ईरानी, रॉबिन भट्ट. स्टोरी बाय राकेश रोशन, प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन. स्टार्टिंग ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना, मनानी मिश्रा. सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडिल. एडिटेड बाय अमिताभ शुक्ला. म्यूजिक बाय सलीम सुलेमान. सॉन्ग्स राजेश रोशन.
प्रोडक्शन कंपनी फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स इंडिया। रिलीज डेट 23 जून 2006, रनिंग टाइम 175 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्रिस बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। क्रिस इज ए 2006 इंडियन सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म directed and produced by Rakesh Roshan. The film stars Hrithik Roshan in a dual role alongside Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, and Manani Mishra. It is the second installment in the Chris franchise and a sequel to Koi Mil Gaya. In the film, Krishna Mehra, who has superhuman abilities like his father Rohit Mehra, fall in love with Priya and follow her to Singapore, where he take on the superhero persona of Chris and sets out to thwart the plans of the evil scientist Dr. Siddharth Arya, who is creating a supercomputer which show the future. Chris was convinced to be a film global significance and a trendsetter in Indian cinema, with VFX on par with those from Hollywood. आइए इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Rakesh Roshan, screenplay by Sachin Bhaumik, Rakesh Roshan, Akarsh Khurana, Hani Irani, Robin Bhatt. Story by Rakesh Roshan, produced by Rakesh Roshan, starting Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Nasruddin Shah, Rekha, Sarat Saxena, Manani Mishra. Cinematography Santosh Thundil, edited by Amitabh Shukla, music by Salim Suleiman, songs Rajesh Roshan. Production company Filmcraft Production Private Limited, distributor Yashraj Films India. Release date 23 June 2006, running time 175 minutes, country India, language हिंदी, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 126.55 करोड़। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।